Good morning, dear students. In the third lesson, understanding the quadrilateral. In understanding the quadrilateral, the previous classes we have to discussing the basic concept of that particular lesson. Understanding the quadrilateral, polygons. Then we have to see these quadrilaterals, angle sum property of the quadrilaterals. Then kinds of the quadrilaterals. Again, this kinds of the quadrilateral we have to discussing the spatial. We have to this trapezium, then the kite, then we have to discussing with the parallelogram, then we have to solving this, we have to say this examples related with this exercise 3.1, this examples related again the 3.2. Then today we have to discussing the exercise 3.3. The first example in this exercise 3.3, here this one given a parallelogram ABCD. This one, this A, B, C and D are the parallelogram. If I have taken this any parallelogram, then almost we have to say the result that depends on the parallelogram is the important. So here we have to say this A, B, C and D are the parallelogram. In the parallelogram, opposite sides are equal. This AB equal to the CD. Either what this AB equal to the DC, the first thing. Then this BC equal to this AD. Then what is this opposite angle also equal. तो अपोजिट एंगल में देखो ये एंगल ऑफ ए इक्वल टू एंगल सी होगा, एंगल ऑफ बी इक्वल टू क्या होगा एंगल ऑफ डी. दैट मींस दिस एंगल ए इक्वल टू एंगल ऑफ सी होगा अपोजिट एंगल्स. एंगल ऑफ बी इक्वल टू दिस एंगल ऑफ डी. अगर दिस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. थर्ड रिजल्ट्स वी आर डिस्कसिंग द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर. तो डायगोनल दैट मींस वी आर टू जॉइनिंग टू नॉन कॉन्जुगेटिव वर्टिसेस. हियर डी एंड बी बोथ आर द नॉन कॉन्जुगेटिव वर्टिसेस. तो कॉन्जुगेटिव किसको बोला था हमने? इफ आउट टू जॉइनिंग दिस सी एंड बी बोथ आर द कॉन्जुगेटिव वर्टिसेस. तो नॉन कॉन्जुगेटिव दैट मींस आउट टू दिस सी एंड दिस ए बोथ आर द नॉन कॉन्जुगेटिव वर्टिसेस. Similarly, this B and D are the non-conjugative vertices. If out to joining two non-conjugative vertices, like here this B और D को हमने join किया, तो B and D are the BD. We have to say this one of the diagonals, and similarly this EC one of the diagonals. Again in the parallelogram, the diagonals are bisect each other. This example number 1 is the basic that depends on the results of the parallelogram, properties of the parallelogram, definition of the parallelogram here. In the first condition, this AD equal to, here we are writing the solution. हमें यहाँ फाइंड आउट क्या करना है AD. तो आप राइटिंग दिस गिवन पैरेललोग्राम ABCD. तो हमारे पास यहाँ है ABCD one of the parallelogram given. Then complete each statement along with the definitions and the properties of the पैरेललोग्राम. तो हमें जो एग्जांपल्स में डेफिनेशन और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है उसका यूज करके ये जो स्टेटमेंट गिवन है वो कंप्लीट करना है हमें. तो टू सी दिस वन फर्स्ट स्टेटमेंट्स दिस एडी इक्वल टू, देखो ये एडी हमारे पास एडी. तो एडी इक्वल टू क्या होगा? बीसी होगा. दिस एडी इक्वल टू बीसी सिंस और राइटिंग हियर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है. तो देखो AD इक्वल टू डायरेक्टली राइट द BC द फर्स्ट स्टेटमेंट्स, बिकॉज इन द पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो AD इक्वल टू आ गया BC आ गया फर्स्ट स्टेटमेंट्स. और राइटिंग दिस रीजन हियर दिस अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. सेकंड थिंग्स, तो सेकंड में देखो एंगल ऑफ DCB इक्वल टू, तो एंगल DCB ऑब्जर्व करो. दिस एंगल DCB दैट मींस C, तो इट्स अपोजिट एंगल. तो C का अपोजिट एंगल क्या हमारे पास ये है. देयरफॉर व्हाट इज दिस A, आइदर व्हाट इज दिस DAB. देयरफॉर एंगल DCB इक्वल टू दिस एंगल ऑफ DAB दैट मींस व्हाट इज हियर ये एंगल C, ये वाला एंगल ऑफ C आ गया आपका. इसके एंगल C के अपोजिट में क्या हमारे पास एंगल ऑफ A है. देयरफॉर दिस एंगल DCB, तो DCB इक्वल टू angle of DAB. So angle A and this angle C both are the opposite. Since of writing here opposite angles of parallelogram are equal. तो opposite angles भी क्या होंगे आपके? इक्वल होंगे. थर्ड, और राइट दिस OC. तो OC देखो दिस वन दिस OC. OC equal to OA.
OC equal to OA. तो OC equal to OA क्यों बोल हम लोग? क्योंकि diagonals of a parallelogram bisect each other. So here this one OC and this OA and this one OD and this OB both are the intersecting at point of O. Therefore, obviously this OC equal to OA. The diagonals of a parallelogram bisect each other. That means this OC और OA both are the equal. सपोज हम लोगों ने OC को 5 सेंटीमीटर कंसीडर किया फॉर एग्जांपल, तो OA भी क्या होना चाहिए आपका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए. दैट मीन कंप्लीटली अप टू दिस AC इज द 10 सेंटीमीटर. Therefore, up to this OC equal to this OA. The diagonals of a parallelogram bisect each other. Then fourth one, this one, this measurement of this angle DAB plus this measurement of this angle CDA. तो DAB देखते हैं हम लोग, देखो एंगल ऑफ DAB, this measurement of angle DAB plus this measurement of this angle CDE that equal to this 180 degree. Since or to writing here, the adjacent angles of a parallelogram are supplementary. तो यहाँ रीजन क्या होगा? The adjacent angles of a parallelogram are supplementary. Then example number 2. Here consider the following parallelogram. यहाँ हमें एक पैरालोग्राम कंसीडर किया हुआ है. Find the values of the unknowns X, Y and Z. See this one, this parallelogram ABCD, A, B, C and D. This is the parallelogram ABCD. We have to find out this value of the X, Y, Z. Again in the parallelogram, opposite sides are equal, opposite angles are equal, the diagonals bisect each other. We have to, using that particular conditions, we have to easily find out the value of the unknowns X, Y and Z. तो हमें यहाँ X, Y और Z की वैल्यू फाइंड आउट करना है. That means we have to say again given things from the parallelogram ABCD. This ABCD parallelogram है. This angle of B equal to this 100 degree. This angle B equal to 100 degree. Therefore, this angle of B 100 given. Again in the parallelogram opposite angles are equal. तो एंगल B के अपोजिट में एंगल D है. Therefore, this angle B equal to angle of D given. This angle of B equal to angle of D. Since opposite angles in a parallelogram are equal. तो opposite angles कैसे होंगे? इक्वल होंगे. तो opposite angles in a parallelogram are equal. Therefore, देखो एंगल ऑफ B 100 डिग्री है, इक्वल टू एंगल ऑफ D क्या है हमारे पास Y. दैट इज यू हैव टू से हियर Y इक्वल टू 100 डिग्री. हमें Y की वैल्यू क्या मिल गई? 100 डिग्री मिल गई. ऑलरेडी देखो एंगल B मिल गया हमें पास 100 डिग्री है. एंगल Y दैट मींस दिस वैल्यू ऑफ दिस Y अननोन. तो एंगल D इक्वल टू और टू से दिस एंगल ऑफ B. तो एंगल B और एंगल D इक्वल है, जिसमें एंगल B की वैल्यू 100 डिग्री है, तो अपोजिट एंगल इक्वल है. तो यहाँ Y की भी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 100 डिग्री. तो आप राइटिंग दिस Y इक्वल टू 100 दे. एंड सेकंड वन, एंड दिस एंगल B प्लस ऑफ दिस एंगल C इक्वल टू दिस 180 डिग्री. दिस एडजेसेंट एंगल्स, सिंस राइटिंग हियर रीजन एडजेसेंट एंगल्स in a parallelogram. So adjacent angle in a parallelogram are supplementary. The adjacent angles in a parallelogram are supplementary. Therefore, angle B plus angle of C both are the adjacent angles. ये एंगल B और एंगल D अपोजिट एंगल्स है. एंगल C और एंगल A अपोजिट एंगल्स है, और एंगल B और एंगल C क्या है? दोनों एडजेसेंट एंगल्स है. Therefore, this angle B plus angle C equal to 180 degree. Because by the property, these adjacent angles of a parallelogram are supplementary. Therefore, we have to say this angle of B देखो हमारे पास 100 डिग्री है, प्लस एंगल C क्या है हमारे पास X इक्वल टू क्या होगा? ये 180 डिग्री होगा. Therefore, this 100 degree transfer this right hand side. तो X
equal to this 180 degree minus of this 100 degree. Therefore this x equal to 180 minus 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, दैट मींस आंसर शुड बी दिस 80 डिग्री. तो हमें यहाँ x की वैल्यू क्या मिल गई, 80 डिग्री मिल गई. इफ टू फाइंड आउट दिस वैल्यू ऑफ दिस x इक्वल टू 80 डिग्री, यहाँ x हमने फाइंड आउट किया 80 डिग्री है, तो एंगल C के अपोजिट में एंगल ऑफ ये है, and therefore directly out right, therefore z equal to again the 80 degree. Also writing this angle of A equal to this angle of C, angle A equal to angle C, because both the angles are the opposite angles and in the parallelogram opposite angles are equal. Therefore this angle of A z equal to angle of C, already you have to find out here, this angle is x. Therefore z equal to x, but x equal to 80 degree. Therefore to say z equal to this 80 degree. I directly have to writing here. So z equal to 80 degree. Therefore in this particular parallelogram we have to say here angle B 100 degree. तो angle of D क्या होगा, ये भी 100 होगा. That means y equal to 100 degree. Opposite angles of a parallelogram are equal. Then by adjacent angle, other adjacent angle in a parallelogram are supplementary. Therefore this angle B plus angle C, its sum equal to the 180 degree. Therefore we have to say this 100 degree plus of this x equal to 180. Then we have to find out this value of this x. तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 80 degree. After finding this value of this x equal to 80 degree, तो एंगल C और एंगल A both are the opposite angle. ये दोनों opposite angle है, इसलिए यहां आप लोग को किसकी वैल्यू, एंगल Z की वैल्यू, आइदर व्हाट इज दिस वैल्यू ऑफ द Z इक्वल टू द 80 डिग्री.